Hello everyone, welcome to economics class. In this video, we will discuss about consumers equilibrium in case of utility analysis. In this very video, we will discuss about single commodity case, two commodities case and law of equimarginal utilities. Dear students, as we have already studied single commodity case and two commodities case in previous videos. In this video, I will just give a glance to the consumer's equilibrium, that is the definition of the consumer's equilibrium and the essential and sufficient conditions for consumer to be in equilibrium in case when he purchases single commodity, when he purchases two commodities and when he purchases several commodities. We will discuss about the hot questions also. Let's start the topic. This is single commodity case. The consumer is in equilibrium when with given his income and market price of the commodity, he plans his expenditure in such a manner that he maximizes his total satisfaction. Dear students, you must keep in mind that the income of the consumer as well as the market price of the commodity remains constant, means there will be no change in the income of the consumer as well as price of the commodity. Now what are the essential conditions? The very first one, ratio between marginal utility and its price is similar to marginal utility of money. What is marginal utility of money? This is worth of a rupee. This is worth of a rupee. What is worth of a rupee? We have already discussed about the concept of marginal utility of money in the previous videos. Marginal utility of money refers to the worth of a rupee, that is, the utility derived by the consumer from the bundle or the basket of goods that he can purchase with his given rupee. Now, the second condition is law of diminishing marginal utility holds good. What is law of diminishing marginal utility? This law states that as a consumer consumes more and more standard units of the commodity X, the marginal utility derived from every successive unit must decline. Dear students, keep in your mind that law of diminishing marginal utility is a universal law. Universal law means is applicable in almost all the goods. जैसे जैसे हम एक कमोडिटी के स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी, एडिशनल यूटिलिटी मींस मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाती है. सो यहाँ पर 3 पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं. पहला, MUX refers to the additional utility derived from commodity X, PX means the price of the commodity X and MUM means the marginal utility of money. Dear students, in utility analysis, marginal utility of money is assumed to be constant. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. और तीसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड मीन्स जैसे जैसे एक कंज्यूमर कमोडिटी एक्स के ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम every successive unit of good X will decline. Now let's discuss about the hot questions. The very first hot question, what happens when MUX by PX is not equal to MUM? So dear students, in this situation there will arise two conditions when MUX by PX may be greater than MUM. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन वॉयलेशन. जब हमने सिंगल कमोडिटी केस किया था अपनी वीडियो में तब मैंने आपको इसकी वॉयलेशन भी समझाई थी. अब यहाँ पर आपकी दो कंडीशंस बन गई, या तो MUX बाई PX MUM से बड़ा होगा या MUX बाई PX विल बी लेस देन MUM. MUX बाई PX इसको हम कह सकते हैं यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कमोडिटी X. इन दिस सिचुएशन यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कमोडिटी X इज मोर देन marginal utility of money. That's why the consumer will purchase more units of commodity X. Now what happens अगर हम ये डिस्कस करें कि MUX by PX is
less than MUM. It means utility derived by the consumer, utility gained by the consumer for commodity X is less. It means the consumer will reduce the purchases of good X. So in first question आपको दोनों ही points को study करना है. When MUX by PX is greater than MUM or MUX by PX is less than MUM. Now second question, what happens when law of diminishing marginal utility does not hold good? इसकी भी violation मैंने आपको वीडियो में कराई थी, because this is a universal law and is applicable to each and every commodity. Now if law of diminishing marginal utility does not hold good or is not applicable, in this situation the consumer will carry on the consumption because his additional utility will not reduce, means he will get more and more utility. It means the consumer will never get satisfied and will continue to purchase the commodity. This is not possible at all. Next, what happens to consumers? What happens to consumers' purchases of a commodity when its price falls if he is in equilibrium? Dear students, this is very important question. देखो बेटा, because the consumer is in equilibrium, so MUX by PX must be equal to MUM. क्योंकि वो equilibrium में है तो ये condition apply होगी. अब वो क्या कह रहा है, when its price falls, अगर price कम हो जाता है, if price of X falls, it means denominator कम हो रहा है, means ये ratio जो है बड़ी हो जाएगी. So due to fall in price, MUX by PX will be greater than MUM. तो violation का पहला केस आ गया. इससे हमें क्या पता लग रहा है, the consumer is getting more satisfaction, means utility gained is more than the price sacrifice or utility sacrifice. That's why the consumer will purchase more units of good X. आपको ध्यान क्या रखना है कि जब MUX by PX is greater than MUM, the consumer will consume more units of good X. और अगर MUX by PX is less than MUM, in this situation the consumer will purchase less units of good X, and the consumer will be in equilibrium, means the consumer will stop consuming more units of good X when MUX by PX is equal to MUM. This is the stage of equilibrium. So ध्यान रखिए, consumer consumption of good X और purchases of good X को बंद कर देगा, will stop consuming more units of good X when MUX by PX is equal to MUM. Will carry on the purchases of good X when MUX by PX is greater than MUM. Will reduce the purchases of good X when MUX by PX is less than MUM. Clear? Move to the next question. This is question number 4. How will you react as a consumer to the situation when price of ice cream rises and your state of equilibrium is disturbed for the consumption of ice cream? Dear students, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस किया था, वहाँ पर हमने गुड एक्स लिया था और केस लिया था फॉल इन प्राइस. यहाँ पर हम इंस्टेड ऑफ गुड एक्स वी आर टेकिंग हेयर आइसक्रीम, एंड इंस्टेड ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स वी आर टेकिंग राइज इन प्राइस ऑफ आइसक्रीम. मैंने वो क्वेश्चन वहाँ आपको समझा दिया. एग्जैक्ट आपने इस क्वेश्चन को यहाँ करना है. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. चॉकलेट सेल्स फॉर ₹20. साहिल, who likes to consume chocolates, has already consumed 4 units. His marginal utility of ₹1 is 4. Should he consume more chocolates or stop the consumption? हमारी कंडीशन क्या होती है? MUX by PX is equal to MUM. ये हमारी कंडीशन होती है. ठीक है बेटा. अब वो कह रहा है चॉकलेट सेल्स फॉर ₹20. 20 रुपये की एक चॉकलेट मिलती है. Sahil, who likes to consume chocolate, has already consumed 4 units. Means 80 rupees वो already spend कर चुका है. Marginal utility of ₹1 is 4. MUM कितना है? 4. इसका मतलब जो वैल्यूज़ हमारे पास है उसको हम पुट कर लेते हैं. हमारे पास चॉकलेट से मिलने वाली यूटिलिटी नहीं है,
मैं इसको MUC लिख लेती हूँ. दिस इज मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम चॉकलेट. प्राइस ऑफ चॉकलेट है 4, प्राइस ऑफ चॉकलेट है 20. क्लियर बेटा. और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है 4 यूटिल्स. अब आपको ये पता है कि कंज्यूमर को कब कंजम्पशन को बंद करना है, जब ये रेशो बराबर हो जाए. अब ये रेशो इक्वल कब होगी, जब उसको मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम चॉकलेट इज़ 80. अगर यहाँ पर हम 80 मान लें, मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव्ड फ्रॉम चॉकलेट अगर 80 हो जाता है तो 80/24 इज इक्वल टू 4. अब आपको ध्यान रखना है हम इसका आंसर कैसे करेंगे. द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUC by PC is equal to MUM. On substituting the values, MUC by 20 is equal to 4. Now, if the number 1, if marginal utility derived from chocolate is 80 utils, the consumer will stop purchasing more units of chocolates because it is a state of equilibrium. If marginal utility derived from chocolates is less than 80, means 60 है, सपोज हम करें, अगर 60 है तो ये बन जाएगा 3. इसका मतलब उसको यूटिलिटी कम मिल रही है, वो क्या करे, ही मस्ट रिड्यूस द परचेजिंग ऑफ चॉकलेट्स. और अगर ये ज़्यादा है, MUC मान लो कि 100 है, इसका मतलब MUC by PC is greater than MUM, he will consume more units of good X. अब यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे कंज्यूमर एक कमोडिटी के ज़्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करता जाएगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम द कमोडिटी विल रिड्यूस, और ये वाली रेशो जो है वो इसके बराबर हो जाएगी. मैं दोबारा से इस टॉपिक को समझा रही हूँ, इसको ध्यान से समझिए. सपोज करिए MUC, देखो बेटा हमने अभी डिस्कस किया कि MUC बाय PC मस्ट बी इक्वल टू MUM. अगर MUC 100 है और PC तो 20 है ही है और ये 4 है, अब ये इक्वालिटी नहीं रही, ये ग्रेटर हो गया. ठीक है, अब उसको क्या हो रहा है कि यूटिलिटी गेन उसकी ज़्यादा है, यूटिलिटी गेन्ड फ्रॉम आइसक्रीम इज़ मोर. अब यहाँ पर क्या है, वो क्या करेगा, ज़्यादा यूनिट्स कमोडिटी ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा चॉकलेट के. जब वो चॉकलेट के ज़्यादा यूनिट्स खरीदेगा तो MUC विल टेंड टू फॉल. क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जैसे जैसे वो चॉकलेट को ज़्यादा कंज्यूम करता जाएगा MUC डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी, और डिक्रीज़ होकर अल्टीमेटली वो कहाँ पहुँच जाएगी, 80 पर पहुँच जाएगी. क्योंकि 80 यूटिल्स क्या है, उसका इक्विलिब्रियम लेवल है. 80/20 इज इक्वल टू 4. सो हमने यहाँ से क्या पॉइंट निकालने हैं, 3 पॉइंट निकलेंगे. इफ़ मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम चॉकलेट्स इज equal to 80 utils, the consumer will stop consuming more units of chocolate because it is the consumer's equilibrium level. Number 2, if MUC is greater than 100, it means MUC by PC is greater than MUM, so the consumer will, so the Sahil, Sahil will consume more units of chocolate. Number 3, if MUC is less than 80, means MUC by PC is less than MUM, Sahil will consume or will reduce the consumption of chocolates. Got it, beta? This is very, very important question. Now move to the next topic. This is two commodity case. In case of two commodities, the consumer will plan his expenditure on two commodities with his given income and given market prices so that he can maximize his satisfaction. Dear students, keep in your mind the main aim of consumer is to maximize his satisfaction. Now what's about the conditions? These are the two conditions. The very first one, MUX by PX must be equal to MUY by PY. Then law of diminishing marginal utility holds good. Now what's about the hot questions? What happens to consumers' reaction
when price of commodity X falls and price of commodity Y remains constant and if earlier the consumer was in equilibrium. अब यहाँ क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में था, इसका मतलब MUX by PX मस्ट बी इक्वल टू MUY by PY. ये तो हो गया बेसिक कंडीशन, हम यहाँ से क्वेश्चन को शुरू कर रहे हैं. फिर वो क्या कह रहे हैं कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स डिक्रीज़ हो जाता है तो ये वाली रेशियो क्या हो जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी. ये बन जाएगा MUX by PX इज़ ग्रेटर दैन MUY by PY. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि PX कम हुआ है, डिनोमिनेटर कम हुआ है, इसका मतलब ये रेशियो ज़्यादा हो जाएगी. ये हमें क्या बता रहा है, इन दिस सिचुएशन द कंज्यूमर विल कंज्यूम more units of good X because the utility derived from good X is more than the utility derived from good Y. और कब तक खरीदेगा, जब तक ये रेशो दोबारा इसके बराबर नहीं हो जाएगी. ये रेशो दोबारा इसके बराबर क्यों होगी, क्योंकि जैसे जैसे एक कंज्यूमर ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स गुड एक्स के कंज्यूम करेगा तो मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव फ्रॉम कमोडिटी एक्स विल फॉल. अल्टीमेटली ये वाली रेशो फिर से कम होनी शुरू हो जाएगी और किसके इक्वल हो जाएगी, MUY by PY. गॉट इट बेटा. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. What happens to the purchases of a consumer when MUX by PX is not equal to MUY by PY? उसी तरह से आपने इसको करना है, दो केसेस बन जाएंगे. MUX by PX is greater than MUY by PY and MUX by PX is less than MUY by PY. फिर से देखिए, MUX by PX may be greater than MUY by PY. In this situation, the consumer will purchase or will consume more units of good X till MUX by PX becomes equal to MUY by PY. और क्यों बराबर हो जाएगा ये, because with the consumption or with the purchase of every unit of good X, marginal utility derived from commodity X will reduce. Now move to the next second case. Second case आपका बनेगा MUX by PX is less than MUY by PY. In this situation, the consumer will consume or will purchase more units of good Y because the utility derived from good Y is more than the utility derived from good X. तो क्या होगा, वो Y को ज़्यादा कंज्यूम करेगा. अगर वो Y को ज़्यादा कंज्यूम करेगा तो ultimately क्या हो जाएगा, MUY will tend to fall. The result will be equality between these two, that is MUX by PX will become equal to MUY by PY. Clear beta? Move to the next question. This is, if PX and PY are given as rupees 4 and rupees 5 respectively and additional utility derived from good X and good Y is given as 20 units for both, will the consumer be in equilibrium? अगर ऐसा क्वेश्चन है तो क्योंकि वो इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है और इक्विलिब्रियम में हमारी कंडीशन क्या होती है, MUX by PX मस्ट बी इक्वल टू MUY by PY. क्लियर. ऑन सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज, MUX कितना है 20, PX कितना है 4 और इधर से MUY कितना है 20, PY कितना है 5. हमने पुट किया, ये आ गया आपका 5, ये आ गया 4. सो 5 इज़ ग्रेटर देन 4. इट मीन्स इक्वल नहीं है. अगर ये इक्वल नहीं है, नो, द कंज्यूमर विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम बिकॉज द रेशियो बिटवीन MUX by PX इज़ नॉट इक्वल टू MUY by PY. गॉट द पॉइंट. इक्विलिब्रियम कब आएगा, जब MUX by PX और MUY by PY बराबर होंगे. आपके इस क्वेश्चन में MUX by PX आ रहा था 5 और MUY by PY आ रहा था 4 because the ratio is not equal, that's why the consumer will not be in equilibrium. Got it beta? Move to the next topic. This is about the law of equimarginal utility. Law of equimarginal utility states that a consumer should spend his limited income on different commodities in such a way that the last rupee spent on each commodity yield him equal marginal utility
in order to get maximum satisfaction. Same definition, he plans his expenditure in such a manner so that he can get maximum satisfaction. हमने पढ़ा था टू कमोडिटी केस में हमारी कंडीशन क्या थी, MUX by PX must be equal to MUY by PY. In case of several commodities, the condition will be extended. For example, if we are taking n commodities, then if we are taking the n commodities, then our condition will become mu1 by p1 must be equal to mu2 by p2 must be equal to mu3 by p3 so on mun by pn. मीन्स सभी की रेशियो को हम कंपेयर करते जाएंगे. अगर हम बात करें एक्स वाई और जेड, सपोज करिए हमारे पास 3 कमोडिटीज़ हैं एक्स वाई जेड. द कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन MUX by PX is equal to MUY by PY is equal to MUZ by PZ. मतलब जितनी कमोडिटीज़ हैं उनको हम इस तरह से कंपेयर करेंगे. और दूसरी कंडीशन क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड्स गुड. क्लियर बेटा? मूव टू द नेक्स्ट. This is about the hot question. If the additional utilities derived from commodities X, Y and Z are 20, 30 and 40 utils. If price of commodities X and Y are given as rupees 4 and rupees 6 respectively, what should be the price of commodity Z for the consumer to be in equilibrium? Because here we are going to discuss about the equilibrium. And the consumer is consuming or purchasing 3 commodities, means law of equimarginal utility will be applied. According to law of equimarginal utility, MUX by PX must be equal to MUY by PY must be equal to MUZ by PZ. Now substitute the values. MUX is 20, MUY is 30, MUZ is 40, PX is 4, PY is 6, PZ is not given to us. Clear? So this ratio is 5, this ratio is also 5, this ratio must be 5. कैसे आएगा 5? If price of Z is 8, then this ratio will be 5. So what will be the answer? For the consumer to be in equilibrium, price of commodity Z should be rupees 5. So this is your answer. Got the concept? So what you are to keep in your mind, that the 3 type of questions may be asked, means there are 3 cases: single commodity case, 2 commodity case and several commodities case. You will have to identify the question, you will have to apply the equilibrium condition. Either you will be given the values or you will be given the violation of the condition. So try to understand the question, try to understand the concept and try to apply the concept in the given question. So this is all about the hot questions based on utility analysis. So dear students, do your work properly, stay home, stay safe and be sincere towards your study. Goodbye, have a wonderful day.